Hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Preeti Batla and I upload affordable fashion, beauty and some fun related videos on my channel. And अगर आप ये सारा कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माई चैनल. एंड फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स जो आपको बहुत ही तरीके से काम आ सकते हैं. सो आपका पैसा भी बचेगा. वेरी गुड वेरी गुड. एंड सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first product which I have been using recently, ये मैं काफ़ी पहले अपने स्कूल टाइम में ये प्रोडक्ट को मैं यूज़ करती थी, बट नाउ आई हैव जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोडक्ट अगेन एंड आई एम इन लव विद दिस. दिस इज़ रियली चीप. दिस इज़ बाय आयुर. दिस इज़ अ क्लेंजिंग मिल्क बेसिकली. So what you got to do is you have to just take some cleansing milk on your hands, just massage it and then wipe it with a tissue. This is the procedure to cleanse your face before makeup or before your skincare or before going to bed or after your skincare or after your makeup. Anywhere you can use this. So this is a multi-purpose product. How? You can use this product as a moisturizer before your makeup or अपने base को बनाने के लिए. Like I keep on emphasizing on the fact that makeup से पहले skin prep कितना ज़रूरी है. इतना सा product you can take and इसके अंदर थोड़ा सा highlighter you can mix. Liquid highlighter हो तो well and good. I don't have liquid highlighter so I'm using this highlighter, brick highlighter. and इसको थोड़ा सा mix करें and this acts as a perfect stroke cream. So you don't have to invest much in stroke cream. So yeah, this gives a glow. बहुत प्यारा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट और ग्लोई इफेक्ट दे देता है ये. तो इसे आप बॉडी मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी बटर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई लव दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ डेफिनेटली द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई बी रिकमेंडिंग यू. एंड अगर आपको और भी ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो फॉर द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई विल बी शेयरिंग विद यू is this kind of lipsticks. Like this I have Nykaa Molten Matte lipstick. जिन भी लिपस्टिक्स के ऊपर लिखा होता है लिप एंड चीक टेंट, ये आपके रोज़ की तरह भी काम आती हैं और आपके लिपस्टिक की तरह भी काम आती हैं. लाइक यूजुअली बोलती रहती हूँ कि इसका जो शेड है वो लिप्स पे उतना ज़्यादा नहीं मेरे दिखता क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े पिगमेंटेड हैं. तो आई थिंक ये वाला जो शेड है ये परफेक्ट है फॉर योर ब्लश, रोज जो भी आप बोलते हैं उसे. एंड आई थिंक दिस ब्लेंड्स सो ब्यूटिफुली ऑन योर स्किन एंड या आई लव दिस प्रोडक्ट. एंड अगर मुझे कभी थोड़ा सा अपने आईज पे पिगमेंटेशन देना होता है, टिंट ऑफ कलर मुझे देना होता है, बट मुझे आई शैडो नहीं अप्लाई करना होता और मुझे कोई ड्राई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने होते, तो आई यूज़ दिस. This acts as a liquid eyeshadow and this comes really handy. आप थोड़ा सा यहाँ पे लगा लो, थोड़ा सा cheeks पे, थोड़ा सा lips पे and perfect no makeup look with this product. So for the next product I have this lipstick by Faces Canada and इस type के जो shades होते हैं ना लिपस्टिक्स के, these work as perfect contour stick. You can use this product 3 से 4 तरीकों में. Like first is the normal lipstick and second is your lip liner. Lip liner also. And the third is your contour stick and the fourth is अगर आपको brown eyeshadow चाहिए तो. So I'll be showing you. You can see the difference. You can see the difference now. You can use your beauty sponge or brush, but I just do it with my fingers. जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, you know that I use this kajal multiple times. First is your kajal and the second is as a liner. Yeah. So this is the second purpose of this kajal and the third purpose is your eyebrow fill.
what I do with my eyebrows is I just take some of the kajal on this kind of brush, angular or just flat brush, and I just, what I do is yeah, bit of it. Yeah, it's done. It's literally this. And the third thing which we can do with the kajal is definitely a bindi. Yeah, we can do this. Is definitely a bindi. And the next is use it as a smoky eyeshadow, like I'll be doing just now. We need to blend this properly, and voila, we have my smoky eyes with the kajal. So coming back to our products, I have the next product. This is a highlighter. This is by Swiss Beauty. I have been talking about this highlighter a lot, and this is a perfect dupe for the Nykaa One highlighter, and they work beautifully well. So I have this highlighter. So I have different shades of it. If I'm using the lightest shade to highlight, I have done this multiple times. This is my go-to eyeshadow, and I do not need much of the blending, much of the brushes to apply this. I'll be showing you, and these are so metallic, so lustrous, and I am in love with this. You can use this product as a highlighter, as an eyeshadow, and as an illuminating cream. Remember the first thing which I have shown you is this, and इसके अंदर आप mix this. इन दोनों का जो combination था, that makes a perfect illuminating cream and a stroke cream. For the next product which I have for you is a mascara brush, or you can say mascara basically. So what I do with the mascara brush, I just dip it in mascara and I just do my eyelashes, upper and lower, and जो बचा हुआ mascara होता है, I just do my brows with it, and it's done. It's literally done. I have my 3 go-to lipsticks with me. It's from CP, from a local vendor, and I receive a lot of DMs regarding this lipstick, but I'm sorry, I cannot find it for you online. Again, you can use this for bronzing, for contouring, for eyeshadow, and for a little of blush. This is a beautiful lipstick, and I'll just swatch it for you guys. See how beautiful color it is, and you can just add this on your cheeks. Yeah, this is a really beautiful shade, and again you can use it as a bronzer, as a contour, as an eyeshadow, as a lipstick, as a lip liner, and you can do multiple tasks with it. I think I'm done with this video. So yeah, this was all for today's video. I really hope you enjoyed it and you have learned something, and I'll be ending this video, and I really hope you like it, and please like this video and subscribe to my channel. Till then, stay at home, stay safe, and I love you guys. I love you so much.